Hi, good evening everybody. Welcome to lesson 6 in the Decoding Algebra series. In this series of lessons, we will learn about all the major topics in algebra and deal with some important problem types within these. My name is Anand Venkatesan. I'm an educator with Unacademy. As you can see, I've done my engineering from VIT Vellore and then went on to do my postgrad from IIM Bangalore. I have about a decade's worth of experience in training students for CAT and other management exams and have scored 99 percentile as recently as CAT 2018. So here's the agenda of today's session. We'll basically look at the basic properties of functions, basics of functions, followed by the properties that will get applied on problems. Before we start the actual agenda, quickly remind you that Unacademy is there on YouTube and we also have a Telegram channel, so do follow us for updates. Here's a quick announcement. Unacademy has announced a Champions League. Unacademy Champions League happens every alternate Sunday at 5 p.m. So this starts from the 3rd of January. Do check out the app, do log in and participate in this contest because you can win exciting prizes and scholarships on offer. Well, there are a couple of batches that have started, that have gone live on Unacademy. Here's a batch which is upcoming in the new year, the CAT 2021 batch with perfect scores. This starts on the 1st of January. Do check out the Unacademy app for the details. Well, all you need to do in order to join a batch is have a valid subscription that you can do by paying up amounts for different plans. You can see that plans are all the way from a 1-month plan to a 6-month, 12-month, 24-month plan. The ones highlighted are the ones that we would recommend, and don't forget to use a 10% discount. AB01 gives you a 10% discount on any of these plans. Right. With that introduction, let's get into today's session. We're dealing with functions and its basic properties. First and foremost, let's understand the meaning of a function. What is a function? A function is defined as y is equal to f of x, right? It's like a black box where I input values in x and what I get as output is the function value, that is y. So inputs will lead me to outputs. That's what a function is. How is this different from a relation? A relationship also maps, x with y, also maps inputs and outputs. But the difference between a function and a relation is that while relationships, can be one to many, a relationship can be one to many, which means that I could possibly give a single input and expect multiple outputs as a result. In a function, it cannot be one to many. It cannot be one to many, which means that a function will not allow multiple values as output for a same single input, right? So that's the crucial difference between a function and a relation, right? That a single input when fed inside a function will only lead to a single output. It cannot lead to multiple outputs. And that's like a crucial difference between a function and a relation. Remember, relations can also be mathematical or non-mathematical. You could, for example, have straight lines as being part of a relationship. Like I could say A is related to B if A and B are parallel to each other, right? So this is a relationship that maps, straight lines. But then a function is usually something that is mathematical in nature and it also will relate, inputs with outputs in a one-to-one manner. हाँ, स्नैप के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है. फंक्शंस स्नैप में भी आएंगे आज. इनफैक्ट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस एंड इवन द नेक्स्ट फंक्शन नेम, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करूंगा फंक्शंस के स्पेसिफिक टाइप्स लूंगा, ये सारा कुछ जो है स्नैप में भी आता है, राइट? तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, आज फटाफट समझ लेते हैं. Similarly, we also need to understand the difference between the domain and the range of a function, right? So what is domain? Domain are all possible values of the inputs, right? Possible inputs for a function are form its domain, whereas range would be possible output values, right? So
अगर मैं इनपुट और आउटपुट को मैप करूं तो इनपुट के सारे पॉसिबल वैल्यूज को डोमेन बुलाते हैं एंड रेंज will be possible values of output. So for example, if I have y is equal to x square plus 3, then I'll say input क्या feed कर सकता हूं उसमें, domain will be all real values, right? Domain will be all real values. But what about range? What about the range? If I think about it, x को मैं positive डालूं, negative डालूं या 0 डालूंगा तो output हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा ही आएगा ना. If I put x as 0, I'll get 3. If I put x as 1, I'll get 4. If I put x as minus 1 also, I'll get 4. So range for this function will be all values beyond 3. So 3 to infinity will be the range of this function. I'm going to make a close bracket on 3 to indicate that it can take the value of y equal to 3. Right? So those are domain and range. Well, on the CAT, you are expected to be able to calculate the domain and the range. But on snap, that's going to be fairly rare. ऐसा question कभी आता नहीं है snap में. But having said that, I'll quickly spend a minute telling you how to calculate the range. Usually domain and the range can be calculated from the description of the function. So for example, if I have y is equal to root of x plus 3, right? So domain निकालने के लिए you will focus on constraints. You will focus on constraints, right? If you have a function which is described like a polynomial or a function, then you'll say if it contains a square root, the square root should not be negative. So if you focus on the constraint that x plus 3 cannot be negative, which means it must be greater than equal to 0, you will get the domain, right? X greater than equal to minus 3. मतलब इसका domain क्या हुआ? Domain will be minus 3 to infinity. It can take minus 3 and all other values beyond minus 3. Similarly, if I define a function as y is equal to 4x upon x plus 5, we'll say for this function the denominator cannot be 0. So x plus 5 is not 0 means that x cannot be equal to minus 5, right? So similarly, you'll notice that, as long as you look at the function's expression and say its denominator cannot be 0, if it contains a square root, that square root should not contain a negative value. That will lead you to calculate the domain. Range, on the other hand, can be calculated as the domain of the inverse. Domain of f inverse. तो f inverse की बात हम करेंगे थोड़ी देर में, how to calculate the inverse of a function, but you must remember that domain of a range of a function can be calculated by first calculating the inverse of the function and then determining its domain. Okay, so now that we know about function, how many kinds of functions are there? Well, functions can be categorized into one-to-one functions or on-to functions. Well, this is not very important for exams like SNAP, but from a CAT perspective, the function types can actually be utilized in even PNC counting kind of problems, right? So let's quickly understand what a one-to-one or an on-to function is. So a one-to-one function or a one-to-one or an injective function is when single input is mapped to a single output, right? So every input must be mapped to a single output, right? So that's called a one-to-one. But an easier way of understanding a one-to-one function is that it must not be a many-to-one function, right? And many-to-one function is quite easy to understand because think about it. A many-to-one function will mean that many inputs will lead to a single output. Can you think of a function like that? Y is equal to x square is a many-to-one function. Can you see this? If I put x equal to 4, I'll get y as 4. Sorry, I'll get y as 16. But, f of 4 is 16, but f of minus 4 will also be 16. So many values of x, in fact 2 in this particular case, 2 values of x will lead to a single value of the function or y. That's called a many-to-one function. So a one-to-one function is strictly, if you feed it a single input, it can only give me a unique output. No other input can lead to the same output, then it's called one-to-one. The second function type is called an onto function, in which case you'll say that an onto function is when its its range is equal to its codomain, right? What do I mean? Well, range is what is determined from the function definition, but the codomain is what is given in the definition, given in the function definition. What do I mean? So for example,
I could define a function as f of x is equal to 2x plus 3, where x lies from minus infinity to infinity, or let's say this is 2x square plus 3, and f of x lies from also from minus infinity to infinity, right? So here this portion given to us is the domain, and what is defined in the function is called its codomain, right? Now in order to determine the range, in order to determine whether the function is onto or not, we need to determine the range of this function, right? So what values can y take? In this case, it's fairly easy to see that the range of this function will be from 3 to infinity. Why? Because the minimum value of the function when I put will be when I put x equal to 0. अगर मैं x को 0 डालता हूँ, hi Adarsh, welcome to this session. अगर मैं x को 0 डालता हूँ तो fx will become equal to 3, right? So that's the minimum value that fx can take. All other values will be more than 3. So the range for this function is obviously going to be from 3 to infinity. तो अगर मैं इस range को और codomain को अब consider करूँ and compare करूँ, I'll notice that there are some values in the codomain which are not part of the range, which means the range and the codomain are not equal. This kind of a function is not onto, which means this is not onto. So when will a function be onto is when it's defined in a manner that all values in the output can be generated by valid input in the domain, right? तो अगर यहाँ पे आउटपुट के वैल्यूज दिए हुए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कैन आई जनरेट fx as -10? No. Nothing I feed the function can generate the value -10, which means there are some values in its range which are not possible to generate. Some values in its codomain, which it is not possible to generate. That's called an onto function. After 12th, is IIM Indore good or Shahid Sukhdev? Well, I'll take a minute to answer that question by Adarsh. Adarsh, to be perfectly honest, I would personally recommend that you go in for Shahid Sukhdev, but that's for, that's a perspective that I have, and this is based on feedback that I've gotten from students who study at both places. But then this is this is one that you should take with a pinch of salt, because IIM Indore, देखो brand तो बहुत अच्छा है, no questions about it, and in fact IIM Indore, the studies are also very, very rigorous, right? The only reason why I would say maybe Shahid Sukhdev over IIM Indore is that IIM Indore tends to be quite intensive a program, which means most of your learning besides the internship periods will be theoretical in nature, whereas at Shahid Sukhdev you'll get a lot of opportunity to explore positions of responsibility, work with clubs, maybe start off small little ventures of your own. So just that time that you get in your hands is useful, number one. And number two, you also open up the chance of getting into a B school, which is better than IIM Indore, right? So only for these two reasons, I would probably put Shahid Sukhdev slightly above IIM Indore. Okay, let me come back to our discussion. So we are saying that functions can be one-to-one or onto, but a bijective function is one that is both one-one and onto. This is both one-to-one as well as onto, right? So which means that to check whether a function is bijective or not, you need to check both one-one and onto properties. Okay, so that was about functions. I need to know how to determine its domain, its range. I should know how to evaluate whether it's one-one or onto or both. But now we'll focus our attention on a few important properties of functions, right? What are these? Let's start with the most basic one. Functions can be odd or even. When is a function odd? When is it even? Well, an even function is when f of minus x equal to f of x, right? So whether you feed it a positive input or a negative input of the same magnitude, the output will remain the same, then it's called an even function. A function is called odd if by negating the input, the output also becomes negative of its previous value, right? So something like y is equal to x power 2 will be an even function, because x को 2 डालो या minus 2 डालो,
फंक्शन वैल्यू सेम रहेगा, बट fx इक्वल टू 5x कैन बी थॉट ऑफ एज एन ऑड फंक्शन, बिकॉज अगर मैं x को 3 डालता हूं तो आई गेट fx एज 15, but if I put x as -3, I'll get fx as -15. That's negative of the original function value. That's called a odd function. I'm not sure what you're asking me, Sheetal. IBS Business School for an MBA, is that your question? Sheetal, usually ये जो सवाल आप पूछ रहे हो IBS Business School, you know, these are not absolute questions. These should be relative questions. IBS versus what? It's possible to compare schools, but never possible to say in absolute terms whether a school is good or not, है ना? कई लोग ऐसे होते हैं जो IBS जाएंगे because they have no other options, but then some others will say, if I have other possible B schools in which I'm getting admission, then I'll compare. Okay. Now odd and even functions देखते ही आपको थोड़ा सा reflection of curves पे भी ध्यान देना है, right? So for example, an even function is, you know, symmetrical about the y-axis, right? And you can see that from y is equal to x square, our example also. Y equal to x square का curve कैसे होता है? एक parabola होता है जो whose vertex passes through the origin. So you can see that it's perfectly symmetrical. Left side में जो curve है और right side में जो curve है वो identical है. If you fold it, it will become one curve, right? That's called symmetry about the y-axis. It's also possible to have symmetry about the x-axis, right? But in सबका जो मूल property है, that's called the property of reflection of curves, right? Sometimes you can take a function and by modifying it you can reflect it, right? So for example, if I get a function gx which is equal to f of minus x, तो यहाँ पे जैसे x को negate करते हैं, you must remember that the curve for f of minus x will be the curve for fx when reflected about the y-axis. Similarly, if I define another function h of x as minus of fx, याद रखो यहाँ पे x को negate नहीं किया है, function को ही negative बना दिया है. So when the function itself gets negated, then you say the function or the curve gets reflected about the x-axis, right? So basically the property of reflection helps me to generate a new curve, right? Let me explain that in a slightly more detail. So for example, if you have, let's consider an example before we move on ahead. So if I define a curve as fx equal to 2x plus 3, right? तो ये तो straight line होगा, इस straight line को हम plot कर सकते हैं, right? In fact, let me erase all the ink and start all over again. Let's say y is equal to, let's say fx or y is equal to 2x plus 3, right? तो सबसे पहले इस curve को plot करेंगे, intercepts निकालते हैं, x को 0 डालूंगा अगर मैं, तो y आ जाएगा as 3, that's 0,3 over here, and if I put y as 0, I'll get x as minus 3 by 2, minus 1.5, so that's going to be over here, right? Minus 1.5, 0. So this is the curve, this is the straight line for y is equal to 2x plus 3, right? अब अगर मैं g of x plot करूं, which is equal to f of minus x, right? What will this be? x की जगह minus x डालो function में, so 2 into minus x will be minus 2x plus 3, right? 3 minus 2x, है ना? अब थियरी क्या बता रहा है? x को नेगेटिव करते वी शुड रिफ्लेक्ट द कर्व अबाउट द y एक्सिस. तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नया स्ट्रेट लाइन ऐसे आना चाहिए विच पासिस थ्रू 3,0,3, बट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू minus 1.5, इट विल पास थ्रू 1.5, बट लेट्स टेस्ट इट आउट. x को 1.5 डाल के देखो, यहाँ पे 1.5 डालेंगे तो इंटू 2 विल बी -3 plus 3 gives me the y value as 0. yes, this point satisfies. how about 0,3? x को 0 डालो यहाँ पे, y का वैल्यू क्या आएगा? gx का वैल्यू आएगा 3 minus 0, that is also 0, right? So indeed both of these points, satisfy the function. So g of x, the straight line, will be as shown here in the curve. So this is proof that when you negate x, you must reflect it about the y-axis.
When you negate y, which means when you negate the function, then the curve gets reflected about the x-axis, right? तो ये reflection के curves, reflection property जो है कई बार exam में use हो जाती है. Okay. Then comes the property of periodicity, right? Functions can also be periodic in nature. What is a periodic function? A periodic function is when f of x plus p is equal to f of x, है ना? मतलब x को increment किया हमने, but function value change नहीं हुआ. That's called a periodic function. All your trigonometric functions are periodic. All trigonometric functions. Which ones am I talking about? Sin x, cos x, tan x. All of these are periodic. Why? अब imagine करो sin x. If you increase, if you write it as sin x plus 2 pi, you will get sin x. Right? You can see x को मैंने 2 pi से बढ़ाया है, angle को मैंने 360 degrees से बढ़ाया है, but the function value remains unchanged. That's when it's called a periodic function. Okay. Similarly, the next property is called composition of functions or creation of composite functions. A composite function is nothing but f of gx, right? f of gx. इसको हम composite function बुलाते हैं, right? This is also written as FOG. FOG का क्या मतलब हुआ? Function of another function is written as FOG, right? याद रखना function को अपने आप पे भी compose किया जा सकता है. Like for example, if I say fx is equal to 2x plus 3, then I can also write something called f2x. What is f2x? FOF, which means f of fx. तो इसको कैलकुलेट कैसे करें? हमेशा कॉम्पोजिट फंक्शंस को इनसाइड आउट इवैल्यूएट करते हैं. सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में फंक्शन का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करो. सो हियर इट विल बिकम f ऑफ द इनरमोस्ट fx कैन बी रिप्लेस्ड विथ 2x plus 3, राइट? एंड देन वंस आई नीड टू कैलकुलेट 2x plus 3, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन के डेफिनेशन में जहां पे भी x था, वी शुड रिप्लेस इट विथ 2x plus 3. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन? 2x plus 3. So f of 2x plus 3 will be 2 times 2x plus 3 plus 3, right? So that becomes 4x plus 9. There you go. This is FOF or F2x, right? So many a time we'll come across problems where you need to compose functions onto themselves or maybe onto other functions, right? And that's something that you should be able to do. And last property is to calculate the inverse of a function, right? If I'm given a function, then how do I calculate its inverse? So inverse of the function निकालने के लिए y equal to fx दिया होगा. You rearrange the terms to get x is equal to f of y, right? तो basically y को calculate करेंगे as x, that is called the function. तो inverse क्या होगा? x को calculate करेंगे in terms of y, है ना? Example, simple example ले सकते हैं. y is equal to, same example लेते हैं, 2x plus 3. So if y is 2x plus 3, then x will be y minus 3 whole divided by 2. This is called the inverse. Why is it called the inverse? Because you'll say f inverse of x will be x minus 3 by 2. अगर मैं फंक्शन वैल्यू को x में डालूं तो जो आउटपुट मिलेगा अब मुझे वो इनपुट होगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई पुट इन द ओरिजिनल फंक्शन, इफ आई पुट x equal to 4, I'll get y as 4 2 is 8, 8 plus 3 11, राइट? बट अगर मैं इस 11 को उठा करके इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, पुट x equal to 11, I'll get f inverse as 11 minus 3 8, 8 by 2 as 4. You'll get the input as the output of the inverse function, right? So that's called an inverse function, and you can calculate the inverse of a function by simply rearranging it and determining x in terms of y. Okay, so those are our basic properties of functions. आज के लिए हम इतना ही theory use करेंगे. All of the questions that we're going to discuss are more commonly occurring in the CAT, but can also feature on the GMAT, can also feature on other exams like the XAT or IFT or even the SNAP. Okay, here's the first question coming up on your screen. Let gx be the function defined by gx plus 1 plus gx minus 1 is equal to gx. Then for what value of p will gx plus p be equal to gx? Essentially, इस प्रॉब्लम में मुझे प्रूव करना है that if this property is true, then it will make the function a periodic function, right? So we need to prove that the function is periodic. तो कैसे प्रूव करें, right?
कि इंक्रीमेंट करने पे फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता है. हाउ डू आई गो अहेड एंड प्रूव दैट? वेल, quite simply what you do is you try and start substituting some values, right? You put, for example, I can put x equal to 1, right? डालूंगा तो क्या आएगा? g of 1 plus 1 2 plus g of 1 minus 1 0 will now be equal to g of 1. अच्छा, similarly now I want to increment it, right? तो इंक्रीमेंट करने के लिए मुझे फंक्शन डेफिनेशन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है. यहाँ पे दिख रहा है x यहाँ पे था और यहाँ पे x को 1 से बढ़ाया है, यहाँ पे x 1 छोटा है, तो शायद 1 से बढ़ाने से काम हो जाए. सो लेट्स इंक्रीमेंट इट बाय 1. लेट्स पुट x इक्वल टू 2. व्हाट लाइक इट? g ऑफ 2 प्लस 1 3 प्लस g ऑफ 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू g ऑफ 2, है ना. बट अगर मैं इस डेफिनेशन को यूज करूं तो g ऑफ 1 का वैल्यू तो है, दिया हुआ है मुझे, तो g ऑफ 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विच मीन्स g3 प्लस g2 प्लस g0 इज इक्वल टू g2, और g2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना. तो मुझे क्या मिलेगा? g ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ g0, है ना. तो इसको इंटरप्रेट करेंगे ऐसे कि फ्रॉम 0 to 3 x has increased by 3, but fx becomes negative. fx has become negative. तो मतलब इंक्रीमेंट करने पे फंक्शन वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ये प्रूव करना है मुझे. बट यहां पे 3 से इंक्रीमेंट करने से फंक्शन वैल्यू तो सेम है बट नेगेटिव हो गया अपने ओरिजिनल वैल्यू का, which means that if you increment by, instead of 3, if you increment it by 3 again, then fx will become negative of negative, which means it will become positive, है ना. तो मतलब अगर मैं कहूं कि g of 6 अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो g of x 6 similarly will be minus g3, और g3 itself is minus g0, so minus of minus g0 will indeed give me g0, है ना. तो 6 से इंक्रीमेंट करने पे फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है. So g of 0 is equal to g of 0 plus 6. That proves that p, the value of p is 6. The correct choice for this problem is option D. Okay, let's move things ahead. Here is question number 2. Given function, this is a piecemeal function. इसको piecemeal क्यों बुलाते हैं? क्योंकि डोमेन के अलग अलग पोर्शन में फंक्शन का एक्सप्रेशन अलग अलग है ना. When x is positive, then the function is 1 upon 1 plus x. But if the function is negative, if the input is negative, then simply add 1 to the input, 1 plus x. So find the value of f1x into f2x. Remember f2x का क्या मतलब हुआ? f2x का क्या मतलब हुआ? f of fx, right? Similarly f3x will be f of fx, है ना. तो कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक हियर. सो पहले एक एक करके कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज fx, व्हाट इज f of 2? सिंस x is positive, it will become 1 upon 1 plus 2, that's 1 upon 3, right? Next step is I want to calculate f2 of 2. This will be f of fx, मतलब ये हो जाएगा f of 1 by 3. x पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल पॉजिटिव है, तो 1 upon 1 plus 1 by 3 आ जाएगा. ये कितना आया? 3 plus 1 4, so this becomes 3 by 4, right? Now f3x will be f of f2x, मतलब ये हो जाएगा f of 3 by 4. बट 3 by 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव है मतलब 1 upon 1 plus 3 by 4 हो जाएगा. व्हाट इज दिस? 4 plus 3 7 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 by 7 हो गया है, right? And so similarly now I can actually generate this much faster because f4 will be f of f3. तो मतलब ये हो जाएगा f of 4 by 7. तो 1 plus 4 by 1 upon 1 plus 4 by 7 आ रहा है, which will in fact be 11 by 4. And finally f5 of x will be f of f4, right? So that will become f of 11 by 4, which means this will be 1 upon 1 plus 11 by 4. That's like 4 by 15.
Okay, wait, I think I made a mistake. f4 of x is going to be 7 upon 11. No, not 11 by, this will be 7 upon 11. So this will be 7 by 11, and so this will be 1 by 1 plus 7 upon 11, and so that will be 11 by 18. अब इनको प्रोडक्ट में डाल देते हैं. f1x 1 by 3, f2x 3 by 4, f3x 4 by 7, f4x 7 by 11, f5x 11 by 18. You can see कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होते जाएंगे. आंसर क्या आएगा? 1 upon 18. Right? So the correct answer to this question is option C, 1 by 18. Right. We're given fx as 2x plus 3, gx as x minus 3 by 2. What is FOG? FOG कैलकुलेट करना है. अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन है. FOG मतलब f ऑफ gx. तो इनसाइड आउट इवैल्यूएट करने के लिए इसको लिखेंगे f ऑफ gx क्या है? x माइनस 3 by 2. ठीक है. अगर मुझे फंक्शन वैल्यू निकालना है तो x की जगह इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं fx में. So I know fx is 2x plus 3, so 2 times the input plus 3 will be the function, but the input is x minus 3 by 2. तो ये 2 और 2 कटेगा, x minus 3 plus 3 is x. Right? So FOG of x will in fact be equal to x. Is that the same as GOF? अभी तक तो ऑप्शन में कोई आया नहीं है, बट ऑप्शन बी seems to be possible, seems to be likely. एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. This should be g of fx. मतलब ये हो जाएगा g of 2x plus 3. x की जगह 2x plus 3 डालते हैं g में. g is what? The function value input minus 3 upon 2. देखो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2x upon 2 is x. So GOF और FOG दोनों सेम है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा. राइट. FOG here is equal to GOF. Hi Yash. 95, 91, 65. 65 I'm guessing is your score in college. Delhi University में है क्या 65%? Right? ये उसी प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन है. For what value of x is fx equal to g of x minus 3? है ना? That's if you try this. I'm going to answer Yash's question. Oops, looks like okay, Yash is there. Yash is saying undergraduate में 65% है. तो to be honest मुश्किल है. IIMs में top 6 IIMs usually ask for around 80%, maybe 77-78% minimum होता है, but 80% का कट ऑफ रखते हैं. तो अगर आपका 65% है, then it seems hard to get into the top 6 IIMs at least. The bottom IIMs, also called the baby IIMs by some, वहाँ हो जाएगा. Right? But top 6 IIMs में थोड़ा सा टफ है. 80% के आसपास लाना पड़ेगा आपको. Okay, how do we solve this question? fx equal to gx minus 3 करना है. तो fx तो हो गया 2x plus 3, और g of x minus 3 क्या होगा? gx में x की जगह x minus 3 डालो. x minus 3 minus 3 whole divided by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4x plus 6 equal to x minus 6. Solve कर लो. You'll get 3x equal to 12. Sorry, 3x equal to minus 12, which means x equal to minus 4. Right? So this is the value when that makes these two expressions equal. Hope that's clear. Right? Another follow-up on the same problem is, what is the value of f of FOG of GOF? अब देखो हम FOG और GOF निकाल चुके हैं. Right? We know that FOG is x and GOF is also x. Right? तो इसको यहाँ ओरिजिनल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. We want f of FOG of GOF x. है ना? तो सबसे पहले तो GOF of x क्या होगा? This portion will become x and this is also x. So basically f of x is the answer, right? Which means the answer will be option C here. Okay, here is another variation.
बेसिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है. fx is defined as having the property fx into fy is equal to f of xy, and this is true for all real values of x and y. तो f2 का वैल्यू दिया हुआ है, मुझे निकालना है f of 1/2, राइट. तो इसको कैसे निकालें, राइट. वी आर गिवन f of 2 as equal to 4. So what would f, I can write this as f of 2 को लिख सकता हूँ f of 1 into 2, और f of xy is equal to f of x into f of y, है ना. तो ये हो जाएगा f of 1 into f of 2, but it will still be equal to 4, and I also know f of 2 is 4, so which means immediately I'll get f of 1 as 4 upon 4, which is equal to the value 1, है ना. तो मतलब मैंने मुझे क्वेश्चन में f2 दिया हुआ था, मैंने f of 1 निकाल लिया, ठीक है. अब f of 1/2 निकालना है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, f of 1/2 को f of 2 into f of 2 into 1/2 should be equal to f of 1, which I already know is equal to 1. But by using the definition, f of 2 into 1/2 will be f of 2 into f of 1/2, and this product should then be equal to 1. तो मतलब अगर मुझे f of 1/2 निकालना है ना, तो वो हो जाएगा 1 upon f of 2 and hence 1 upon 4. That's option B. Hi Lakshay, you're asking me, Lakshay is asking me which newspaper should one be reading, and the choices is giving me MCQ बना दिया आपने इसको भी, Indian Express, Live Mint या Hindustan Times. Question for you Lakshay, are you looking to prepare for the PI VAT stage? ऑब्जेक्टिव क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने का? आपको एग्जाम के लिए, करंट अफेयर सेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है, और इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज एंड GDs and WATs? Right? To my mind, I think if it's current affairs, then the best newspaper is none of the ones that you've mentioned. The best newspaper would be the Hindu. But Live Mint, amongst the options that you've given me, I think Live Mint is an excellent source for business news. Business and economy के लिए Live Mint is an excellent newspaper. So my suggestion would be read Live Mint, but supplement it with some online source for current affairs, because Live Mint will not be comprehensive. Okay, hope that answers your question. ये देखो, एक हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ये क्वेश्चन. The function f is positive when x is positive, x is non-negative. Then for what value of p will this expression be true? Again you can see this reminds you of a periodic function, right? x को हमने p से इंक्रीमेंट किया तो फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, इसी को पीरियोडिक बुलाते हैं. तो पीरियोडिसिटी निकालनी है, p निकालनी है मुझे, है ना. मतलब वही करेंगे, इंक्रीमेंट कर करके देखेंगे कहाँ पे बात बनती है. We'll start with this expression, right? Last time I assumed values, this case I'm not assuming values, I will increment, right? तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. f of x plus 3 into f of x minus 3, right? So now we'll say increment x by 3, right? Basically जहाँ पे भी फंक्शन में x था वहाँ पे x की जगह x plus 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, right? तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? f of x plus 3 will be equal to f of x plus 6 into x plus 3 minus 3 will be f of x, right? अब fx को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, which means this will become f of x plus 6 into f of x plus 3 into f of x minus 3, and this equals f of x plus 3, right? fx plus 3 cancel out हो जाएगा because it is positive for all values, which means it can't be 0, तो मैं cancel out कर सकता हूँ. तो इससे क्या समझ में आया? f of x plus 6 will now be equal to 1 upon f of x minus 3, है ना. तो रेसिप्रोकल बन गया है. कितने से इंक्रीमेंट करने पे? x minus 3 में हमने कितना ऐड करा जिससे कि x plus 6 बन जाए? यू नोटिस एट 9 से इंक्रीमेंट किया है, राइट? अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप कहोगे इन दोनों में से किसी एक को तो x बनाते हैं ना. तो x बनाने के लिए x की जगह वापस x plus 3 डाल दो. x की जगह वापस x plus 3 डालेंगे, so left hand side will become f of x plus 3 plus 6, that's f of x plus 9, and right hand side will become 1 upon f of x plus 3 minus 3, that's f of x.
है ना। 1 fx प्लस 9 इज इक्वल टू 1 बाई एफ एक्स। अगर मैं वापस 9 से इंक्रीमेंट करूं, क्योंकि रेसिप्रोकल थोड़ी बनाना है मुझे इक्वल टू ओरिजिनल एफ एक्स बनाना है, तो 9 से और इंक्रीमेंट करके देखते हैं। यहां क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 18 will now be equal to 1 by f of x plus 9, which means this will be 1 upon 1 by fx, and so this will become f of x, है ना। देखो f of x plus 18 equal to f of x, मतलब p का वैल्यू क्या आया, ऑप्शन सी, the periodicity of this function is 18. Okay, Yash has another question for me. Even if I score 99 plus, couldn't I justify that in 10th and 12th I have 90 plus due to lack of interest I scored in UG? Well, you're right, Yash. You could probably use that justification in an interview, but उसके लिए फिर इंटरव्यू तक पहुंचना पड़ेगा ना। होता क्या है कि ज़्यादातर बी स्कूल जो है इंटरव्यू कॉल्स जब जनरेट करते हैं, शॉर्टलिस्ट जब जनरेट करते हैं, they will use like a software for it, right? Think about it like a software. There's a rule, and that rule will directly tell them who gets shortlisted and who doesn't. And that rule will go something like, we'll only look at the top 10% candidates on the basis of 10th score. We'll only look at the top 10% candidates in terms of 12th score. We'll only look at the top, 10 or 20% candidates on the basis of graduation score. तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखोगे, इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी तक फोकस नहीं करना चाहिए, दिस इज मोर अकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड। तो अगर आप अपने कोर्स में, लेट्स से यू आर स्टडीइंग बीकॉम ऑनर्स, इफ यू लुक एट ऑल स्टूडेंट्स हु स्टडीड बीकॉम ऑनर्स इन इंडिया, राइट, एंड यू पुट देयर स्कोर्स, और उसमें से टॉप 20% कैंडिडेट्स को अगर हम देखते हैं ना, तो ज्यादातर 20% कैंडिडेट्स होते हैं 80% एंड अबव रेंज में। सो अनफॉर्चुनेटली सिंस यू विल बी आउटसाइड दैट रेंज, आप कंसिडर ही नहीं होगे फॉर अ शॉर्ट लिस्ट। इवन इफ इट वाज बॉर्डर लाइन 75-76, मैं आई वुड हैव सेड आउटसाइड चांस है, बट 65 में तो यार चांस ही नहीं लग रहा है मुझे, राइट। सो आई होप दैट इट मेक्स सेंस टू यू। ओ बीएससी लाइफ साइंस, तो मतलब आपका कंपैरिजन इंजीनियर्स के साथ होगा, साइंस एंड टेक्निकल कोर्सेज के साथ होगा। इंजीनियर तो और भी नंबर लाते हैं यार, इंजीनियर में तो 80 होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वे the shortlist criteria is stacking up for you. Unfortunately I don't think there is any way out of it. If possible, improve करो यार अपने undergrad score को. I know it's not easy, but yeah, I mean, unfortunately that's the only possibility for you. The alternative for you would be to add other qualifications, but वो भी बहुत मुश्किल है, like work experience के number add करो अपने profile में, या पॉइंट्स ऐड होते हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के लिए, लाइक अ सीए या सीएफए, you can probably add that, but none of those choices will make sense for you right now. Alright, let's move things ahead. ये अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम है. दिस इज नॉट fn, दिस इज f raised to the power n, right? fn of 50, which basically translates into fo. ऐसे करते जाएंगे n times, it should become 845. So what value will do that for input of 50, है ना? तो ये क्वेश्चन करने के लिए अगर मुझे निकालना है कितनी बार मुझे, रिमेंबर द क्वेश्चन आस्क्स यू फॉर n, which means it's asking you how many times do you compose to reach 845. तो एक काम करते हैं ना, 2-3 बार कंपोज करके देखते हैं. f of 50 is 2 into 50 plus 3, मतलब 103 आ रहा है, ठीक है. तो f2 करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा f of f50, मतलब f50 तो 103 था, तो ये हो जाएगा f of 103. तो 103 डालो, 2 into 103 is 206, 206 plus 3 is 209. नहीं बना, तो f3 कैलकुलेट करते हैं. f3 क्या होगा, f of f2, मतलब f of 209. तो इसको डबल करके 3 ऐड करो, 418 plus 3 is 421. नहीं बती बात. What about f4? f4 क्या बनेगा, मुझे दिख रहा है ये काफी रैपिडली 800 के आसपास आ रहा है. दिस विल बी f of f4, सॉरी f of f3, which means this will be f of 421. डबल करेंगे 842 plus 3 is 845. लो एंड बिहोल्ड आंसर आ गया. कितनी बार कंपोज किया है, 4 टाइम्स कंपोज किया है. सो n is equal to 4. Is that there in the choices? Option D is what we should mark. Right? Hope that's clear to all of you. अच्छा, इसी वेरिएशन पे एक टफ क्वेश्चन ले लो. ये
है ना. ये थोड़ा स्नैप लेवल के लिए आउट ऑफ रीच है, बट फॉर कैट और अदर एग्जाम्स एक्सपेक्ट टू गेट क्वेश्चंस लाइक दीज, राइट. ये फंक्शंस का जरूर है, बट ये इसका जो अप्रोच है वो सीक्वेंसेस के क्वेश्चंस जैसा होगा, राइट. व्हाट आर वी गिवन? वी आर गिवन दैट फंक्शन का वैल्यू व्हेन x is 1, f of 1 is given to me as 3600, और एक जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट्स f1 plus f2 plus f3 all the way till f of n is given to me as n square fn, है ना. तो इसमें मुझे f9 तक अगर पहुंचना है तो मुझे बार बार ये एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा. अगर ये बात समझ में आती है आप लोगों को, so then the immediate conclusion should be, can I rework this expression somehow, right? And the moment you try to do that, आपको एक चीज दिखेगी कि यहां पे भी fn है और यहां पे भी fn है, तो क्यों ना इन दोनों को एक तरफ रखा जाए. तो अगर मैं fn को उधर ले जाऊं तो दिस विल बिकम f1 plus f2 all the way till f of n minus 1. एक कम हो जाएगा यहां पे फंक्शन, और राइट साइड में जाएगा तो fn कॉमन ले लेंगे इंटू n स्क्वायर माइनस 1. अच्छा, बट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में सम आ रहा है टिल n माइनस 1 टर्म्स, राइट. तो n टर्म्स का सम अगर n स्क्वायर fn है तो n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या होगा? n माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू f ऑफ n माइनस 1 आएगा, राइट. सो आई विल गेट n माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू fn माइनस 1 इज इक्वल टू fn इंटू n स्क्वायर माइनस 1 को n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 लिख सकता हूं. तो ये एक n माइनस 1 कट जाएगा and you'll end up getting f of n equal to n minus 1 divided by n plus 1 into f of n minus 1, right. तो ये इंपॉर्टेंट है, right. ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? अब एक काम करते हैं. अब इस एक्सप्रेशन में अगर मुझे एक फंक्शन वैल्यू मालूम है तो मैं अगला फंक्शन वैल्यू डिटरमिन कर सकता हूं, राइट. दैट्स द वे यू शुड रीड दिस, दिस इक्वेशन, राइट. कि अगर मुझे एक फंक्शन का वैल्यू मालूम है, मैं उसका वैल्यू डालूंगा तो अगला फंक्शन वैल्यू मिल जाएगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट n इक्वल टू 2 डालो इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा f2 जो मुझे निकालना है, राइट. और राइट साइड हो जाएगा 2 minus 1 1 अपॉन 2 plus 1 3 इंटू f of 1, 1/3 ऑफ f1 निकल जाएगा ये, है ना. सिमिलरली n को अगर मैं 3 डालूं तो क्या होगा? देखो एक बार, n को 3 डालेंगे तो ये होगा f of 3 इक्वल टू 3 minus 1 2 3 plus 1 4 इंटू f of 2. अच्छा, तो रिकर्सिव हो रहा है ना ये, कि मतलब 1 पता है तो 2 निकला, 2 का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 निकल आएगा. अगर मैं n को 4 डालूं, n को अगर मैं 4 डालूं, आई विल गेट f4 इज इक्वल टू 3/5 इंटू f of 3, है ना. और कुछ सीक्वेंस दिख रहा है 1/3 2/4 3/5. तो अगर मैं ऐसे करके एंड तक जाऊं, f9 बनाऊं, तो जनरेट करो 9, यहां पे 4 है तो डिनोमिनेटर 5 है, यहां 3 है तो डिनोमिनेटर 4 है, यहां 2 है तो डिनोमिनेटर 3 है. तो f of 9 होगा तो 9 minus 1 8 अपॉन 9 plus 1 10 इंटू f of 8, राइट. और अब मैं रिकर्सिव वाला लॉजिक अगर यूज करूं और सब्स्टिट्यूट करता हुआ जाऊं, सो f of 9 शुड देन बी इक्वल टू 8/10 इंटू f of 8. f of 8 क्या होगा? n को मैं क्या डालूं यहां पे? n को मैं डालूंगा 8 डालूंगा तो 7/9 आ जाएगा इंटू f of 7 डालूंगा तो f of 7 विल बी 7 minus 1 6 अपॉन 8 इंटू f of 5 डालूंगा तो 5 minus 1 नहीं 6 डालूंगा, 5 डालूंगा तो 6 डालूंगा तो 6 minus 1 5/7. इनफैक्ट अब मैं सीक्वेंस जनरेट भी कर सकता हूं 4/6 3/5 2/4 एंड देन फाइनली 1/3 इंटू f1 विच इज 3600, है ना. तो ये आएगा. और आप देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, 8 और 8 कट गया, 7 और 7 कट गया, 6 और 6 कट गया, 5 और 5 कट गया, 4 and 4 will cancel out, 3 and 3 will cancel out, right. And that's it, which means न्यूमरेटर में 2 टर्म्स बचे हैं, 1 into 2 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 2 और बचे हैं, 10 into 9 90 into 3600 3600. अब 90 into 40 is 3600 और न्यूमरेटर 2 into 40 है, so my answer will be 80. That's option
That's option E. Right? I hope all of you guys watching me solve this question got a hang of it. थोड़ा सा मैंने इस पे एक शॉर्टकट यूज किया है. I hope that you guys spotted me doing this. I hope you guys figured out कि मैंने यहाँ पे इसको जनरेट कैसे किया. थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट यूज किया कि इसी पे बार बार डालना है. पहले 9 डालेंगे, फिर 8 डालेंगे, फिर 7 डालेंगे, फिर 6 डालेंगे, ऑल द वे टिल यू रीच 2. राइट, वहां तक डालेंगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट क्यूमुलेटिवली. इट्स अ रिकर्सिव वन, so you will successively generate all of these values of the function. Okay, right, I think this is the last question, last few questions for the day. For what value of the, for what function value does the inverse not exist? Basically कौन से function value के लिए, basically कौन से y के लिए x does not exist, ये है question, है ना. तो ये निकालने के लिए मुझे इनवर्स निकालना पड़ेगा. इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, है ना. तो मुझे x निकालना है तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. आई विल गेट xy माइनस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ठीक है. अब अगर x निकालना है तो x वाले टर्म्स को एक तरफ रखते हैं, x इंटू वाई माइनस 2x, और y को बाकी सब टर्म्स को उधर ले जाते हैं, 5y प्लस 3, है ना. तो x कॉमन ले लेंगे और जो भी कॉमन में आया ब्रैकेट में उसको डिनोमिनेटर में डाल देते हैं. 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट डू आई गेट? y माइनस 2. सो देयर यू गो, दिस इज द इनवर्स. तो y का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो x का वैलिड वैल्यू रिटर्न नहीं करता है? यू कैन सी, अगर मैं y को 2 डाल दूं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा. सो x इज नॉट डिफाइंड फॉर y इज इक्वल टू 2. And so the answer will be option A, y equal to 2 does not, x does not exist. Asim asking me, is there a class on functions tomorrow? Asim, कल functions की class नहीं है, कल logs की class है, कल नहीं होगी. Tomorrow and day after I'm not available. On the 2nd we will continue with functions. We will discuss specific function types starting with logs. So that will happen on Tuesday. Same time on Tuesday, on the 2nd, same time on Saturday. Okay, ग्राफ के बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. We're given that the graph of y plus x and y minus x is shown here, right? ये वाला curve is given in the problem. It says this plots y minus x with y plus x, right? अगर ये दिया हो तो which of these option choices A, B, C, D, E will represent the curve for y against x? थोड़ा सा अजीब है, बट इन्फर करने के लिए आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन कर्व में दिया हुआ है. वी नीड टू यूज दिस ग्राफ. तो एक बार इस ग्राफ को देखो. इट पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इट इज नॉट इट्स नॉट द 45 डिग्री लाइन. इट्स नॉट y इक्वल टू x, राइट. इन फैक्ट इट विल बी y इज इक्वल टू लेट्स से 3x, समथिंग लाइक दिस, है ना. मैंने अज्यूम कर लिया, लेट y be equal to 3x. बट ये y equal to 3x नहीं है. y एक्सिस पे जो मैंने प्लॉट किया है वो x एक्सिस का 3 टाइम्स है, राइट. दैट इज, राइट, व्हाट दिस मीन्स इज दैट हियर यू कैन से y minus x would be equal to 3 times y plus x, है ना. मैंने अज्यूम करके सॉल्व किया है. तो ये 3 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स भी हो सकता था. इट डजंट मैटर रियली, राइट. बट नाउ आई वांट y विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसको 3y प्लस 3x लिखेंगे, और फिर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो y को एक तरफ रखते हैं, x को एक तरफ ले जाएंगे. I'll get 2y equal to minus 4x, which means I'll get y is equal to minus 2x. और y equal to minus 2x का कर्व कैसा होगा? Will it be like this? No. Will it be like this? No. This is like y equal to 2x. That's also wrong. This is like y is equal to 0.5x. This is also wrong, right? y equal to minus x का कर्व कैसे होता है? ऐसे होता है ना. This is y equal to minus x. तो अगर y equal to minus x ऐसा है तो डबल क्या होगा? इससे थोड़ा सा स्टीप ज्यादा होगा, which is option D. Right, so the correct answer to this question will be option D, as shown in the choices. Okay, moving on, last problem type. Right, मैंने आपको इस क्वेश्चन में 2 कर्व्स दिए हुए, fx and f1x, right, in the domain of x belonging to -2/2, -2 to 2, right. So mark A if fx is equal to f1 is equal to minus fx,
है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रिफ्लेक्शन वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। याद करो, जब फंक्शन पे नेगेटिव डालते हैं तो कर्व कहां रिफ्लेक्ट होता है? अबाउट वाई एक्सिस, है ना। अगर x को नेगेट करते हैं तो इट्स रिफ्लेक्टेड अबाउट द x एक्सिस, और यहां पे दोनों में नेगेटिव डाला है तो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा अबाउट बोथ द एक्सिस, राइट। इसको समझते हैं। सो अगर ये fx है तो अगर मैं इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूं तो नया कर्व यहां आना चाहिए था, विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन ओवर हियर, है ना। तो यहां पे मार्क क्या करेंगे? वी शुड मार्क a डायरेक्टली, या। बट इफ आई लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट, यहां पे fx यहां पे है ना। तो अलग अलग कलर से हम फिगर आउट करेंगे कि अगर मैं इसको x एक्सिस पे y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूं, सो दैट कर्व विल कम ओवर हियर विच इज एग्जैक्टली f1x। यहां पे भी y एक्सिस पे ही रिफ्लेक्ट किया है f1x बनाने के लिए, तो ये कर्व भी यू विल मार्क a, right? But if you go to question number 3, by the way, matlab I know the figure looks a little misleading. This is the curve for fx and this is the curve for f1x, है ना। तो अब अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूं x एक्सिस पे तो f1x का कर्व नहीं बन रहा है। इसको अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं, इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, नहीं बना। इसको x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो नीचे वाले लाइन का इमेज यहां बनेगा, ऊपर वाले लाइन का इमेज नीचे बनेगा। ये भी नहीं है, ये राइट साइड में आ रहा है, y एक्सिस के राइट साइड में आ रहा है, नहीं होना चाहिए यहां पे। अच्छा, व्हाट इफ आई डू बोथ? व्हाट इफ आई स्टार्ट विद fx फर्स्ट? आई नो दिस वन इज रिफ्लेक्टेड अबाउट बोथ एक्सिस, वन एट अ टाइम, है ना। तो पहले x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये बनेगा, फिर अगर पहले y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो ये बना, फिर x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करूंगा तो ऐसे आएगा ना, which is exactly what is given over here. So by using the knowledge of reflection of curves, you'll know in this problem you should mark option C. Right? I know this is a little counterintuitive. Reflection होता कैसे है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअली एक तरीका और होता है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखूंगा, अगर मैं कोई एक पॉइंट कंसिडर करूं, इस पे 3 पॉइंट मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, राइट। व्हाट आई कैन सी इज दैट f of 0 इज, व्हाट इज f of 0? x को 0 डालूंगा तो y इक्वल टू 1 बन रहा है, राइट। f of, अगर x को 2 डालता हूं, ये 1 होगा ना, 2 नहीं हो सकता। f of, अगर मैं x को 1 डालता हूं तो आउटपुट आ रहा है 0, और अगर मैं x को 2 डालता हूं तो आउटपुट आ रहा है -1। ये तो f का हो गया। व्हाट अबाउट f1? f1 में सेम इनपुट डालूं, 0 डालूं तो क्या आ रहा है? f1 में 0 डालूंगा तो -1 आ रहा है, विच इज इक्वल टू f of 2 तो नहीं कर सकता, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ f0। अच्छा, अगर मैं f1 कैलकुलेट करूं, 1 पे तो है ही नहीं, है डिफाइंड ही नहीं है, बट f1 at -1 is defined as f of is defined as what? 0। तो ये मैच कर रहा है, दिस इज इक्वल टू f of 1। So f1 and f of -1 are equal, and similarly f of, अगर मैं f of -2 कैलकुलेट करूं यहाँ पे, तो f of -2 is in fact equal to +1, right? Which means f of -2 is 1, which will be the negative of -1, minus of -1 लिखूंगा, तो ये बनेगा minus of f2, right? So f of -2 is equal to minus f2, which means f2 can be, f1 था ना, ये यहाँ पे f1 था, which means that f1 of -2 is negative of the function of the negative of x, right? तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, x को भी नेगेटिव बनाया और फंक्शन को भी नेगेटिव बनाया, तब जाकर के आंसर आया है। यू कैन ऑल्सो इन्फर, मेक एन इन्फ्रेंस बाय ऑब्जर्विंग द वैल्यूज देयर, बट यू कैन सी ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है ज्यादा। इट्स बेटर टू जस्ट यूज रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व्स। Okay, I hope you guys had a clear understanding of the basic properties of functions, and will be able to apply this on these kind of questions, largely composition of questions and periodicity of functions, but also sometimes inverting the function and
inverting the function and reflecting it. Right? तो ये applications भी हैं. Do check out the Unacademy app. There are special lectures which you can access free of cost. All you need to do is register and you can start accessing these lectures by me and other mentors. If you're satisfied, if you like what you see there, do go ahead for the plus subscription. There's plenty to sort of gain there. All you need to do is install the app, choose your goal as CAT and subscribe for plus, and you'll see these plans starting from 1 month all the way till 12 and 24 month. Zyada recommended है 12 month 24 month plans because quite simply it's it gives you more access, it gives you access to more educators. But remember to use my referral code AV01 क्योंकि कोई भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करेंगे उस पर 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. राइट. Remember, there were a couple of batches that are starting on the 1st of January. Make sure that you check them out and join them with the referral code AV01. Remember, many courses that Unacademy teaches specific to MBA. We have a channel that's CAT4MBA on YouTube. We also have a Telegram channel, and there is a personal channel that I use to post my updates. Right. So do follow us, and there's plenty to learn along the way. Have a great New Year to everybody. And I'll catch you guys in the next session. Thank you. Have a good night.